So let us start our session about center of masses we were discussing. Okay, yesterday we have talked about 2-point mass system, then 4-point masses also we have discussed, and we are talking about which type of masses. We are talking about point masses. Remember this term, okay? I have taken a mass here, I have taken a mass here. Is this a system? System. They may be connected, they may not be connected, but they are a system. Alright? Then we have discussed about 4 masses. All these are point masses, discrete masses. Discrete masses. What do I mean by discrete? This duster, chalk. 2 masses, are they connected? No. They are separate. Right? So, together when you consider them, you call it as a system. Together when you consider them, you call it as a system. You take the case of a car, lot of particles, the whole car is moving, all the particles are moving. Together they are behaving. That is called a system. Okay? Now, when I say that this system is moving, that means the center of mass of the system. See, the center of mass may be in this mass, maybe in this mass, or somewhere else. Obviously, it will be somewhere else, not in those masses. Okay. So, when you say that this system is moving, you are basically saying the center of mass is moving. Okay. You basically are saying that the center of mass is moving. Just to make our life easier, we have discovered this concept of center of mass. All right. So, suppose another type of question. We will take 3 masses, okay, like this. This is 3 kg, this is 2 kg, and this is 4 kg. Okay, this is 2 meter, and this is 3 meter. So can we find out the center of mass? Yes, you can find out. You can take this point as the reference. All right. Here it is one dimensional, isn't it? You are going to get only, here you are going to get only one dimension. We have to find out x bar. X bar will be equal to m1 x1, m2 x2, m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. You can take this as the reference point. So इसका सेंटर इसी के सेंटर में होगा. So 3 into 0 plus second mass. Okay, m2 is 2 kg into x distance. इसके सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास होगा. तो इसका रेफरेंस लाइन से कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर है. 2 plus m3 4 into 2 plus 3 5. सर यहाँ पे 0 लगाया ना, इसको भी 0 कर देते. नहीं, जब टोटल मास लेना है 3 plus 2 5 plus 4 9. So it is 4 plus 20 29 by 9. 29 by 9 meters. So it is how much? 9 3 are 27 20. It is approximately 3.2. So 2 meter and this is 3 meter. तो 2 के बाद एक और मीटर यहाँ पर है. देखो यहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पर है इसका सेंटर ऑफ मास. So this is how it is. Okay. After that it is simply you can take some other coordinate and verify my statement. एक और काम करते हैं. चलो हम लोग बीच का एक कोऑर्डिनेट पकड़ते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, ताकि हम लोग को उस पर कमांड आए. इस बार मैं क्या करता हूँ, इसका देखो कोऑर्डिनेट क्या है? 3.2 है. कहां से? यहां से 3.2 है यहां पर. ठीक है, इस बार मैं क्या करता हूँ, बीच वाला कोऑर्डिनेट पकड़ता हूँ. एंड वी विल कैलकुलेट x बार इज इक्वल टू m1 m2 m3. यही है, इट इज नॉट चेंजिंग. दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3.
ओके चलो m1 x1 3 इंटू, देखो यहां पर लेफ्ट भी है और राइट भी है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट प्लस एंड माइनस. आई विल कॉल दिस एज प्लस, so this will be my minus. All right, so 3 into plus, तो कहां पे जा रहे हैं हम लोग? m1 is in the left, so I have to put what? -2, बराबर, because I am taking this as the reference point now. Second m2, what is m2? 2 into इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? वही है, तो ये हो जाएगा 2 into 0 प्लस m3 4 into x, इसका कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है 3 डिवाइडेड बाय 9. चलो कितना है देखते हैं. दिस इज -6, दिस इज 0 एंड दिस इज 12, तो दिस इज 6/9 बराबर. ये देखो ये 29/9 है, डेसिमल को छोड़ो, ये यहां से 29/9 है और ये यहां से 6/9 है, ये होता है ये डिस्टेंस 6/9 है. तो यहां से मेजर करते हैं एक बार, कितना होगा? 6/9 प्लस 2, 18 प्लस 6 24/9. ये तो कुछ गड़बड़ कर दिया हमने. हाँ, यहां पे मैंने कचरा किया है. ये कचरा का नाम क्या है? 4 प्लस 20 इज 24. मुझे लगता है मैं मैथ्स भूल गया. 24/9, ठीक है. इधर 24/9 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? 24/9 आ रहा है. और फ्रैक्शन को छोड़ो, 3 8 और 3 3. मेन पॉइंट इज कि हमने यहां से कैलकुलेट किया. कितना आया आंसर? 6/9 आया. लेकिन पूरा सिस्टम का मास किधर है? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किधर है? वो वही है. अब कोई भी रेफरेंस पॉइंट तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. आई जस्ट वांटेड टू शो यू विद एन डेमोन्स्ट्रेशन. चलिए जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. जस्ट डस्टर कचरा हो गया. चलिए let us see mass is arranged in the form of triangle. ठीक है, यहां पर 1 kg, यहां पर 1 kg, यहां पर 1 kg लगा दिया. मान के चलो कि ये मेरा 2 मीटर है और ये मेरा 3 मीटर है और ये मेरा 3 मीटर, ठीक है. वो ट्राइंगल वाला फंडा लगाओ. 3 + 2 should be more than 3. बराबर. The sum of any two sides should be more than the third side. It is not a triangular arrangement. It is 3-point mass system. It is looking like a triangle. ये किधर भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, किधर भी हो सकता है. इसका निकालना है. What is the procedure? It is called 3-point mass. Okay? तो इसका भी वही प्रोसीजर. लेकिन मान के चलो if it is coming somewhere here, I don't know where it will come. Obviously it will have an x and it will have a y, isn't it? It will have some x and it will have some y. So we have to find out that x and y. So x bar क्या हो जाएगा? n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 होगा divided by sigma m लिखवाना. Now we are calling this as x and this as y. So this is my reference line now. So this is my 0 0. ठीक है. चलो यहाँ पर ये डिस्टेंस देना पड़ेगा मुझे. This distance, let us say it is 1.5 meters. ठीक है. It is not exactly in the center, but it is at 1.5 meter, let us say. और ये डिस्टेंस हो गया हमारा 0.5 मीटर. तो क्या करेंगे? इनका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो. इनका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो. 0 0 ये कितना हो जाएगा? ये 2 है. 2 कामा y axis 0. What is this coordinate? X coordinate is 1.5. Y coordinate is how much? Now this is 3.
यहीं पर ध्यान से देखो, देखो ऐसा है तुम्हारा ट्रायंगल, दिस इज योर 1.5, दिस इज 3, तो व्हाट इज योर y, y will be equal to root over 3 square minus 1.5 square। ये ऐसा क्यों होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर because I am very weak in maths, let me do calculator बाजी। चलो 2.59 अगर लिखो 2.6 क्या जाता है, ठीक है। तो दिस कोऑर्डिनेट इज हाउ मच, दिस इज x is 1.5 and y is 2.6 with respect to this point। तो x और y निकालना है, x का ये फॉर्मूला है, y का भी ऐसे ही आएगा, y का हो जाएगा क्या, I told you that x-axis, y-axis. Basically, what are you trying to do? You are taking moment about x-axis and moment about y-axis. That is what you are doing. Center of mass में what is the funda? Funda is you are basically calculating what is this m1 x1. m1 is this x1. x1 तो 0 होगा। चलो ये मास पकड़ता हूँ, इसका m3 x3। m3 x3 क्या होता है? m3 x3 is this distance. You are taking moment about y. When you take moment about y, you are getting x coordinate. This is moment about y. You are getting, ये फंडा है इसलिए बता रहा हूं। moment about y ले रहे हो, x बार निकल रहा है। moment about x ले रहे हो, you have to see my yesterday video very carefully. What I am talking here. Same point again and again. You cannot keep on repeating. You have to complete our syllabus also, right? So इसका लॉजिकल मीनिंग बस वही है, बस यहां से निकालो फिर x बार डायरेक्ट लिखो, m1 इसको मैं m1 बोल रहा हूं, m2 m3, ऑलराइट। दिस इज माय m1 जस्ट फॉर क्लैरिटी फॉर ऑल, दिस इज माय m3, m1 x1, x कोऑर्डिनेट ले लो, m1 कितना है 1, 1 into x कोऑर्डिनेट 0, m2 इट इज 1 into x कोऑर्डिनेट लेना है क्योंकि हम लोग x बार निकाल रहे हैं, y मत लगा देना, ठीक है, नेगेटिव मार्क लेके घर चले जाओगे। 1 into 0, 1 into 2 प्लस इसका 1 into क्या लगाना है, x लेना है 1.5 है, ठीक है। बस 1 plus 1 2 plus 1 3, ये जो भी आएगा तुम्हारा आंसर है x बार का। कितना है निकाल लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 1.5 हो गया, so 4.5 में 3 कैलकुलेट का जरूरत नहीं है, this is 1.5 meters, okay। y बार में क्या करना है, m1 y1 1 into y1 0 plus m2 1 into y2 is also 0 plus m3 1 into what is y2 2.6, y3 sorry, y3 is 2.6, so just write that 2.6 divided by 3, so 2.6 divided by 3 is almost 0.9, okay। so 1 comma 1.5 comma 0.9, 1.5 मतलब यही लाइन हो गया बराबर, and 0.9, so this is 3, 0.9 will be somewhere here, this is your point, this is your COM, ठीक है, दिस इज योर COM, ठीक है। तो देखो ये हाइट क्या है, दिस हाइट इज 2.6, ये हाइट कितना है 2.6, 2.6 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आता है 0.9 अप्रोक्सीमेटली। सो अगर इसको मैं बेस मान रहा हूं तो इट इज 2.6 by 3, isn't it? तो ट्रायंगल के केस में हमने वही सीखा था ना, जब ट्रायंगल है ऐसा तो इसका सेंट्रॉइड किधर है, यहां से h/3 बोला था मैंने, ठीक है। तो सारे मासेस अगर सेम हैं तो यू कैन ट्रीट इट एज अ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। अलग अलग मास है तो अलग अलग मास का देखते हैं, सारे मास एक हो गए, कितना आया अप्रोक्सीमेटली h/3, वो मैच हो गया, ठीक है।
अलग अलग मासेस का देखते हैं। इसको लिख लो। इन द सेकंड टाइम आई विल डायरेक्टली पुट द स्टेप्स, ओके? ऑलराइट। ये देखो, this is 2 kg, this is 5 kg, and this is 3 kg. Let us say this is 2 meter. These lines are not just simply I am drawing it. And this is 3 meter, and this is how much? 3 meter. Again we will take. We are in this case we are taking different masses now. Directly we will calculate. इसका coordinate कितने? 0, 0. ये कितना हो गया? 2, 0. इसको पहले निकाला था, ये 1.5, 2.6 है। वो तो चीज नहीं होगा, वो तो ज्योमेट्री है, ठीक है? तो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस डिस्टेंस इज 1.5, ओके? लाइक योर अर्लियर केस। लेट अस क्विकली कैलकुलेट x bar is equal to x bar is equal to m1 x1, 2 into 0 plus this is m2, 5 into 2 प्लस ये कितना हो गया? 3 into 1.5 डिवाइडेड बाय 2 plus 5, 7 plus 3, 10. कितना होता है? 5 into 10, 10 into 10, this is 4.5, 14.5, 14.5 by 10, which is nothing but 1.45 meters. Let us calculate the y bar. इस बार we have to take the y coordinate. 2 into 0 plus 5 into 0 plus 3 into 2.6 divided by कितना है? 10. So how much is this value? These two values are 0. 3 into 2.6. 26 3s are how much? 25 3s are 75. Another 3, 78. So this will be 7.8. ठीक है? 7.8 divided by 10. 0.78 meters. बराबर? 2.6 into 3, 7.8. 6 are 18, 1, 3, 2, 6, 7. 7.8 by 10, 0.78. So you are getting this now. Y coordinate how much? 0.78. 2.6 by 3 कितना है? 0.86. देखो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा, ओके? जब सारे मासेस एक हैं, दे आर सेम मासेस और 1 kgs और 2 kgs और समथिंग, उसको ट्रायंगल जैसे ट्रीट कर सकते हो. बट व्हेन देयर आर डिफरेंट मासेस, exactly at that point you will not get a center of mass. You will get at some other slightly different point. Okay? Just note down this. Let us see one more illustration. Okay. And let us say that this is your 0 0, right? This slant distance is b, and this distance is a. This slant distance is b. This is a parallelogram. AB, it's a parallelogram AB and theta in between. So you have to find the center of mass of this. So सबसे पहला step, what is that you have to do? You have to find the coordinates of all the points. Alright. So while finding the coordinates, you have to find the x distance and the y distance. So if you take this point, what is the x distance? It is a. Alright. And what is the y distance? It is 0. No big guesses for that. Suppose you take this point. If this is b, this is also b. So you have to find this y distance now. So this is theta, this is b, this is y. Y by b will be equal to sin theta.
So y will be equal to b sine theta, right? So this y distance is b sine theta. Now what is this x coordinate? See, from here to here it is a. You have to find this x coordinate, which is this much portion also, na? Isn't it? ये एक straight line में नहीं है. This is like this. So from here to here it is a. And what is the small distance? What is this x? This small x? This is what? This is x divided by. Let us call this as x. X by b is equal to cos theta. X will be equal to b cos theta. So ये जो small distance है, ये b cos theta है. This small distance is b cos theta. This vertical distance is b sin theta. So what will be the coordinate of this point? From here to here it is a. ये छोटा जोड़ना पड़ेगा. तुम्हारा आंसर हो जाएगा a plus b cos theta is your x coordinate, and y coordinate is b sin theta. Okay. Now coming to this point, brought this perpendicular. Okay. So you have to find the x coordinate. That means you have to find this distance. What is this distance? It is b cos theta and b sin theta. इसके बाद तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, दिस इज 0 0, दिस इज a gamma 0, right? This point is at a distance from the origin. When you come to this point, you have to find the vertical, it is b sin theta. You have to find the horizontal distance, you know, you have to find from here. So this is a, so this is also a. So this extra you have to calculate, that is b cos theta. That extra is b cos theta. Y coordinate is this. इसका और इसका y coordinate will be same. And what is this x coordinate? This distance is the x coordinate, and it is b cos theta. After getting all this, you have to simply put it in the equation. So quickly we will find out that x bar is equal to, देखो इसको m1 m2 m3 m4 ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? So यहाँ पर masses नहीं दिया है, pure plain geometry, alright? So you can assume that all are 1 kgs, all point masses given are 1 kgs. Okay, basically cracking geometry is the more important point here. So what is your x bar? m1 x1, 1 into 0, m2, 1 into a, m3, 1 into a plus b cos theta, right? Plus m4, 1 into b cos theta. ठीक है, ये हो गया x divided by 4. Whatever you get, that is your answer. What is y bar? Y bar is equal to m1 y1, 1 into 0 plus 1 into y2 0 plus 1 into इसका y coordinate, 1 into b sin theta plus 1 into b sin theta. Alright, this is the answer. So if you simplify this, you are getting b sin theta, b sin theta, 2b sin theta, which is 2b sin theta by 4, or b sin theta by 2. What is this answer? A plus b cos theta and b cos theta. So there are two b cos thetas. Here there is another a. It becomes 2a and 2b cos theta by 4. So when you simplify, you are going to get a plus b cos theta by 2. A plus b cos theta by 2 is the x bar, and y bar is b sin theta divided by 2. Okay, screenshot and note down. Maybe some robot has to be, you should push the button here and you should do all like this. Tomorrow you can discover that type of things. Okay. Next, let us say it is given like this.
there are masses kept on the x-axis. ठीक है? How much masses? All are unit masses. This is at 1 meter. This is at 2 meter. This is at 3 meter. So on and so forth, up to nth meter. Okay? Now find the center of mass. Find the center of mass. अब इसको n बोलो कुछ भी बोलो, procedure is same only. So it is one dimensional. You will get what? X bar is equal to m1 x1 plus m2 x2 so on up to mn xn. Mn xn divided by m1 plus m2 so on up to mn. ठीक है? This is what I'm going to get. So put the values. M1 is 1. So 1 into this distance is 1. Again 1 into 2. This is second mass is at 2 meters. From इसका center of mass 2 meter distance पे है. Then 1 into 3. So on up to 1 into. Basically, we are doing a math problem. No? 1 plus 1 plus 1. N terms. Physics is basically maths and maths is basically physics. I think. Physics, but physics you need to know a lot of maths. All right. 1 को n बार जोड़ दिया है, divided by n आएगा. ठीक है? 1 को 2 बार जोड़ा तो 2 आएगा, 1 को 3 बार जोड़ा तो 3 आएगा, 1 को n बार जोड़ा तो n आएगा. यहाँ पर if you take 1 common, you are getting 1 plus 2 plus 3 plus n terms, isn't it? 1 plus 2 plus 3 plus up to n. What is the equation for that? N into n plus 1 by 2. ये हो गया numerator divided by the denominator. So what is the answer? N plus 1 by 2. Okay? Pause and take a screenshot. These type of questions come, you know. They are simple questions only. Just you have to apply the same formula and do it. Okay. That sum of n terms you should know. Huh? Some formula you have to remember. Everything you cannot keep on deriving in the exam, right? Sum of n terms is sum of n terms. What did I tell you? N into n plus 1 by 2. You see 1 plus 2 plus 3 plus 4. How many n terms are there? 4 are there. Add these 4 plus 3, 7 plus 3, 10. Right? The formula was n into n plus 1 by 2. So n is 4, 4 into 5 by 2. 10. So the formula was this. Sum of n terms. You should remember that. Let us say it is given like this. This is your 0, 0. Unit mass here, 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 like that. Now the first mass, all are 1 kg only. This is at a distance. Alright? And this is at AR distance. This is at AR square distance. And the nth one, AR cube. The next one will be AR cube distance. And the nth term is AR power n distance. Alright? Then you are asked to find out the center of mass. Same question, but here the locations is different. This A is a number, a constant, R is some ratio. In which form it is? It is in geometric progression. It is in geometric progression. We have to find the center of mass. So directly लिखेंगे x bar is equal to sigma I is equal to 1 to n mi xi divided by mi I is equal to 1 to n. ये जनरल फॉर्मूला होता है. ठीक है?
So this is equal to x bar is equal to 1 into m1 x1 1 into a plus m2 2 into ar plus 3 into ar square. ओके, यहां 2 आता है तो यहां पर 3 आता है, तो यहां पर आएगा n plus 1 a r power n. लुक एट द रीजनिंग, 3 आता है 2 आता है 2 आता है 1 आता है, यहां पर n आएगा तो यहां पर n plus 1 आएगा, डिवाइडेड बाय n terms, all are 1 kg masses, so you will get what 1 plus 1 plus 1 etc up to n times. Alright, so if you take a common, you are getting what? You are getting 1 plus 2r plus 3r square plus so on up to n plus 1 r power n divided by n. Okay, so it is coming into this format now. This format, let me do one thing. Why I have put 2 here? कुछ गड़बड़ किया मैंने, गड़बड़ किया है. देखो 1 into a है, सेकेंड मास भी 1 है ना भाई, तो ये यहां पर 1 आएगा. ठीक है, m2 is how much? all are 1 kg only. all are, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है all are 1 kg, तो ये सब तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 1 हो जाएगा और ये भी तुम्हारा 1 हो जाएगा. तो ये सारे हैं, ये 1 खेलेंगे, ठीक है, ये 1 हो जाएगा. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली न्यूमरेटर, तुम्हारा न्यूमरेटर हो जाएगा 1 plus r square plus r cube so on up to r power n. ध्यान से देखो, ये तुम्हारा जीपी सीरीज में है और उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. तो जीपी सीरीज का, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं निकालता हूं. देखो जीपी का सम ऑफ टर्म्स इन जीपी क्या है, इज इक्वल टू a into r power n minus 1 by r minus 1 provided r is greater than 1. This you have to remember. Sum of n terms in GP. Sum of n terms in GP is a into r power n, a into bracket में r power n minus 1 divided by r minus 1. It is equal to a into 1 minus r power n divided by 1 minus r provided r is less than 1. अगर r less than 1 है तो इसको लिखना है, r greater than है तो इसको लिखना है. जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, ये देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको हम प्रूव कर सकते हैं. पहले इसको निपटा देते हैं, ठीक है. तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे r less than 1 है. It is not given in the question, so it will become a into, ये a क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 है. ये a और ये a दो अलग अलग चीज हैं, ठीक है. ये तुम्हारा जो अंदर है वो पूरा जीपी में है, दैट इज इन जीपी. सो हियर a is 1 into 1 minus r power n divided by 1 minus r. Okay, that is what is the numerator. What is denominator? Divided by n. So this whole thing is your answer. Okay, this whole thing is your answer. ठीक है. तो once bio people were asking me GP, they don't understand all that. Let us say we will add 2 plus 4 plus 8 plus 16. इसको ऐड करना है, इसको नॉर्मली ऐड कर लो. 4 plus 2 6, 6 plus 8 14, 14 plus 16 30. ठीक है. तो ये इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 into 1 plus 2 plus
4 प्लस 8, ऐसे लिख सकता हूं इसको। तो ये को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3। जीपी में क्या होता है देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। 4/2 कितना है? 2 है। 8/4 2 है। 16/8 2 है। इस 2 को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। इस 2 को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो इस वाले यहां पे देखो r कितना है? 2 है। इज इट ग्रेटर देन 1? इट इज ग्रेटर देन 1। तो व्हाट यू हैव टू, इस फॉर्मूला को लगाना है, ठीक है। तो यहां पे लिखो 2 इंटू, इसका पहला टर्म क्या है? 1 है, तो 2 इंटू 1 r पावर n, कितने टर्म है यहां पर? 1 2 3 4। सो 2 पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो 2 पावर 16 माइनस 1 कितना होता है? 15 होता है। 2 इंटू 15। आगे तुम्हारा सम। सर जब इसको हाथ से जोड़ सकते हैं तो ये कलाकारी करने का क्या जरूरत है? ठीक है भाई, 4 होगा तो जोड़ लोगे, 1000 होंगे तो जोड़ते जोड़ते बैठोगे क्या? इसलिए ये सब लगाया, ठीक है। बायो पीपल जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल एंड सो दैट दे गेट द आइडिया वेरी क्लियरली। व्हाट जिसको भी कर रहे हो उसको फील करो, यू नो, फील व्हाट यू आर डूइंग rather than blindly। गलत करो लेकिन उसको फील करते हुए करो। That is what I want to actually tell you through my videos and my classes. Take care. See you. Bye bye.